Hello everyone, welcome to another video in my data science learning series. Today we are going to explore about pandas. डेटा साइंस में हम अक्सर बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम करते हैं और आप पांडा को एक टूल बॉक्स की तरह समझ सकते हैं जिसमें कई तरीके के टूल्स होते हैं विच हेल्प्स अस इन वर्किंग विद दीज ह्यूज डेटा सेट्स। चाहे वो टैबुलर डेटा हो या फिर टाइम सीरीज का डेटा हो, पांडा से आप आसानी से इन सारे डेटा सेट को मैनेज कर सकते हैं। इसके हाई परफॉर्मेंस डेटा स्ट्रक्चर और टूल से हम डेटा को इंपोर्ट आसानी से करते हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं बस कुछ ही लाइन्स ऑफ कोड के साथ। So in this video, I'll be explaining everything in a very straightforward manner using examples so that by end of this learning video, you'll have a solid understanding of what exactly is Pandas and how it helps us in data analysis. So let's get started. So this video is also going to be a hands-on video और इसका कोड मैंने अपने GitHub के रिपोजिटरी में भी डाल दिया है जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू पांडा से। तो एक्चुअली में पांडा है क्या? तो पांडा इज़ अ ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। सबसे पहले इसको मैकेंसी ने 2008 में लॉन्च किया था और तब से ये जो है काफ़ी सारे वेरियस फील्ड्स में यूज़ होता है, इंक्लूडिंग फिनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस के कई सारे फील्ड्स में पांडास का यूज़ होता है। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई। तो ये सारी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेल देम टू। और जब आप ये बताएंगे आप उन सारे इंटरव्यूअर्स को तो दिस विल मेक एन इम्प्रेशन फॉर यू कि दिस पर्सन हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पांडास। तो पांडास का जो नेम डिराइव हुआ है अगेन फिर से पैनल डेटा से डिराइव हुआ है। तो सबसे पहले इसको पैनल डेटा के तौर पे इसको लिया गया था एंड देन फ्रॉम देयर दे डिराइव द नेम एज पांडास। तो इनिशियली ये पैनल डेटा पे ही बस लिमिटेड था बट नाउ तो इट इज़ हैंडलिंग वाइड रेंज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट्स। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाई डू वी नीड पांडास एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट पांडास। तो पांडास का सबसे पहले है कि ये काफ़ी इजी टू यूज़ है और जब आप इस वीडियो का आगे जा कर के देखेंगे एग्जांपल्स तो आपको चलेगा बस कुछ ही लाइंस ऑफ कोड से हम लोग बहुत ही चीज़ को अचीव कर पाते हैं इन एनालिसिस ऑफ एनी गिवन डेटा सेट्स। और ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस होता है जैसा कि मैंने बताया कि ये बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई है और हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि नमपाई जो है काफ़ी फास्टर होता है व्हेन कंपेयर टू पाइथन लिस्ट एंड ऑल। एंड नमपाई जो है काफ़ी एफिशिएंट होता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है, तो उसी के टॉप पे पांडास को बिल्ड किया गया है इन। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी हाईली परफॉर्मेंस वन। देन ये काफ़ी पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें 1D डेटा हो या फिर 2D डेटा हो, ये दोनों को सपोर्ट करता है। और इसमें जो है काफ़ी टाइप का काइंड ऑफ डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग का टूल्स अवेलेबल है, लाइक हाउ डू यू प्री प्रोसेस एनी डेटा, हाउ डू यू मर्ज टू डेटा सेट्स, हाउ डू यू रीशेप योर डेटा सेट, हाउ डू यू हैंडल द मिसिंग डेटा, हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट्स, हाउ यू रिमूव all the other values. So all of these are possible in pandas. Then pandas also helps us in data analysis and visualization. इस पार्ट को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, मैटप्लॉटलिब एंड सी बॉर्न को, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा एंड देन विल कम बैक अगेन हियर। सो कहने का मतलब ये है कि ये डेटा एनालिसिस और विजुलाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है और जो है इसमें जो है इंटर ऑपरेटेबिलिटी है बिकॉज इट सपोर्ट्स वेरियस डेटा फॉर्मेट, CSV हो, एक्सेल हो, एक्सक्यूएल डेटाबेस हो, URL हो, सारे से इट इज़ वेरी easy to work with pandas and it is very easy to import the data into your panda data types. Then it also helps strong support for time series data. तो जब भी ऐसे स्टॉक प्राइस वगैरह का जब टाइम सीरीज का एनालिसिस करना पड़ता है तो इन दोज केसेस pandas is very useful. Having said that, now we will move on to the actual hands-on part. But before that, first we'll have to install the pandas library. तो उसके लिए सबसे पहले करना है एक कमांड लिखना है pip install pandas and then run this cell. Since I already have it installed, so I'm not running it, but in your cases you can run this and this would take a minute or so and then you might have to restart your kernel. तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, देन विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द पांडास डेटा स्ट्रक्चर पार्ट। तो बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया था कि पांडास दो डेटा स्ट्रक्चर को मेनली सपोर्ट करता है, 1D विच इज़ सीरीज and 2D which is data frame. So let's get started with pandas series which is one dimensional labeled homogeneous array. It is similar to any spreadsheet या फिर excel का जो कॉलम होता है या फिर किसी भी टेबल का कॉलम होता है where each values has one index to that and it can be created based on any numpy array, कोई भी डिक्शनरी हो या फिर स्केलर वैल्यू हो, we can create any series and we'll see that. टू गेट स्टार्टेड सबसे पहले हमें क्या करना है, पांडास को इंपोर्ट करना है। तो विल राइट ए कमांड import pandas the library which we have installed
and we are naming this library as PD. So I'll run this cell, and then once it is run, then we'll create a series from a list. तो आपको पता है कि ये हमारा लिस्ट है, इसमें 1 2 3 4 है. एंड टू क्रिएट एनी सीरीज, पांडा सीरीज, सबसे पहले क्या करना है, पी डी डॉट सीरीज का एस कैप्स एंड देन पास दैट अरे का नेम, एंड दिस विल बी माई पांडास. तो ये जो है सीरीज अपने आप जो है 1 2 3 4 आ गया, साथ ही साथ सबको एक इंडेक्स भी मिल गया 0 1 2 3 4. एंड वी ऑल नो कि इंडेक्सिंग यूजली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट्स विद 0. एंड डेटा टाइप ऑफ दिस series in this case is int64. Now let's say I convert this integer to string and then I run. Then if you see, the data type has changed to object because there is no specified value of this particular list, right? So that's why it has automatically identified as this could be a data type of object. Similarly, let's say you have a dictionary, इसमें कि a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, c का वैल्यू 30 है, एंड वी वांट टू क्रिएट अ सीरीज आउट ऑफ दिस. तो इसको भी कैसे करना है, सिंपली पांडास जो हमने इंपोर्ट किया उसका नाम दिया था pd डॉट सीरीज एंड पास दिस डिक्शनरी. एंड नाउ इफ यू रन दिस, then instead of this 0 1 2 3 as an index, now you will have index as a b c. So we'll see index is a b c and these are the values and these are the series which has been created. Similarly, if say you, let's say you have a scalar value, तो let's say कि मुझे एक 5 के साथ एक सीरीज क्रिएट करना है, पांडा सीरीज करना है, और उसमें मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ 0 1 2 3. सो इफ़ यू सी फॉर ऑल द इंडेक्सेस यू विल हैव 5. सो 0th इंडेक्स पे 5 है, 1th पे 5 है, 3rd पे भी 5 है, and then again the type is int64. So this is how you can create various pandas series based on your various particular values, be it a list, be it a dictionary, or be it a scalar values. And now let's see the second data type of pandas, which is data frames, which is nothing but a 2-dimensional label data structure. Series जो था वो 1-dimensional data structure था, whereas data frames जो है 2-dimensional data structure है. तो बेसिकली जैसा कि आपका पूरा स्प्रेडशीट हो गया या फिर पूरा एसक्यूएल टेबल हो गया, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेटा फ्रेम. तो कहता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स. सीरीज क्या हुआ, एक कॉलम हो गया किसी भी टेबल या फिर किसी भी स्प्रेडशीट का, वेराज डेटा फ्रेम जो हो गया वो है इंटायर स्प्रेडशीट, इंटायर टेबल को हम लोग, विच इज़ द कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स, इज कॉल्ड एज डेटा फ्रेम्स. तो बेसिकली डेटा फ्रेम्स आर वेरी वाइडली यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन में, विच हेल्प्स अस इन मल्टीपल ऑपरेशन सच एज फिल्टरिंग करना है या फिर आपको ग्रुपिंग करना है, मर्जिंग करना है. तो ये सारे चीज़ को काफ़ी आसानी से पांडास के डेटा फ्रेम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. एंड ऑल ऑफ दीज यू विल सी व्हेन वी विल गो एंड डू द हैंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. So now let's see कि how do we create a data frames out of the list and dictionary. तो consider कि I have a dictionary where keys are named, age and city, and values are the list of them. So to create a data frame out of this, simply we have to do is we have to do pd dot data frame and pass this dictionary here. So now if you'll see, once I print this particular data frame, you'll see all of these keys have been converted into column names, and automatically the indexing has been given from 0 1 to 3 to all the values of this list. Similarly, let's consider you have a list of list where you have 1a 2b 3c and you want to create a data frame out of this list of lists. So let's say we can simply again do the same thing, pd dot data frame, pass this list here and print this. So here you will notice कि automatically the indexing has been given 0 1 2 and कॉलम नेम बी में भी जो है 0 and 1 आ गया है क्योंकि हम लोगों ने कीज डिफाइन नहीं किए हैं. तो देयर इज ऑल्सो अ फीचर इन पांडास डॉट डेटा फ्रेम कि यू कैन सिंपली पास द कॉलम नेम्स एज वेल. तो लेट्स से आई हैव अ कॉलम्स वेयर आई वांट टू कीप नंबर्स एंड लेटर्स, देन यू विल सी कि दिस 0 and 1 नाउ विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर कॉलम नेम्स विच वी हैव गिवन हियर. So this is how you can create a pandas data frame from any given dictionary or a list. Alright, so now we are moving to the more interesting part of pandas, where we will read the data from the different file formats which we have, be it a CSV or be it an Excel file. So I already have a data set which looks something like this, and this is the data which I have downloaded from United Nations data set, where all the Indian cities are mentioned, all the different kind of sex is mentioned, whether this is a male or female, and on year what was the population count on that. And what we'll do is we'll read this data, we'll try to manipulate this data, we'll try to perform all those possible actions of basically any data scientist or data analyst would perform on this particular data set. The same things we are going to do in this learning series. So we'll get started with our
रीडिंग द डेटा फाइल, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगेन import the pandas, since we have already imported it. It's not needed again, but then if you have not yet imported, if you want to directly start from reading the data part, then you have to import every time you are working here. Then my data set ka name, which is population.csv, and that data set I'll keep it here. So let's say I have this csv data, I am keeping this as a variable name, and to read any csv file you have to pass a function of pandas which is read csv, read underscore csv, and then all the values of this population.csv which you can see will come to this particular variable, and that's what we'll see here. You'll see automatically the indexing has been given, and year, sex, city, and value, the same things were there in my data set, and all of those things have come to my this particular data frame. Same way you can also read from the data from the excel file. I'm just doing with the csv, but you can also basically read the same thing. If you have a data file in a csv format, you can use the same functions, but then a little difference here is that read excel you'll have to write instead of read csv. You'll have to now write read excel, and then you can pass that excel as a extension of your file, and then you can print that data. And similarly, let's say you have an SQL database connection. To read the data from SQL database connection, let's say, again, just considering that this is a library which will SQLite 3 is the library, and we have a database connection, you can simply write any query, and all the values of those queries will be kind of coming into a column and tables, basically column and rows. So those things can simply assign into a pandas variables, and to write a function pds.read SQL query you can write and pass your query values here and pass the SQL connection. Again, this is just for a dummy purpose, just for your understanding that these are the different values which are possible. Since I don't have any SQL database connection currently, so I'll not be running this cell as well. But we will now move on towards the data inspection and selection part of our CSV. So this is how kind of we have a CSV file. Now let's say I want to read the head. So basically first 5 rows of my kind of Excel which is there. So I'll simply write df.head, and then you'll see that all those 5 rows have come here. That 0th row is this, 5th row is this value. Let's say I want to have not 5 but some random number, I mean my manual numbers, then you can simply pass the numbers here. So let's say I want only the first 3 rows, you can pass head and then 3, and then you'll see that only 3 have come. Let's say you want 30 here, in that case you can simply pass 30, and then you'll see 30 records have come here. Now in cases where you want to see the last records of your particular given data set, then you can make use of this function of tail. So df.tail again will give you the last 5 rows. In cases where you want to modify, don't want the last 5, rather only last 3, then you can pass 3 as a number, and it will give you last 3 rows of particular column. Similarly, there are some other basic information if you want to understand about your data set. So what you can do is df.shape you can pass. So shape is nothing but this will give you how many rows you have and how many columns you have. So in my particular data set, I had around 2334 rows and 4 different columns, and that is something which you can see here, that total of 335, because one is the column name, but then rows are 2334, and that same thing has been printed here, and 4 columns are there. So let's say you want to also list all of the columns which you have, so we can simply use data frame, whatever the variable you have, dot columns, and this will give you all the columns of that particular Excel. So in this case we have year, sex, city, and value, and then type of all of the columns are object. In case you want to see the data types of all the columns which you have, you can simply make use of df.d types, and then for each column you'll get to see what is that corresponding data types. Then in cases you want to have a normal information about your data frame, you can simply make use of df.info, and then there you will see that there are 2033 entries which are there. There are total 4 columns, all these column names, how many of non-null columns, how many of them are kind of null columns, what is the type of each column, all those kind of things. You can see what is that memory usage which this particular data frame is taking. Then let's say you want to select all the values which are kind of missing values. Let's say you have null values available. So let's say I have one of the columns, I'll see how many cities where null values are there. You can simply pass as df, inside that again df, and then city, and then the function is na, and then would give you that currently there are no records where city is empty.
Same way you can also describe your particular data frame. So you can simply describe के लिए you can use df.describe, and this would basically give that all the kind of integer and float value columns का काउंट कितना है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 25% का वैल्यू क्या है, 50% क्या है, मैक्स वैल्यू क्या है, 75% क्या है, ऑल दोज थिंग्स ऑफ all of these values will get for year and value, because only these two are of type integer. So object के लिए ये नहीं मिलेगा, but for all the integer and floating columns you will get to see all this statistical value of your particular data frame. With this, now we will move on to let's say some of the more kind of advanced topics where you have, let's say you want to select one of the columns. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, टाइप करना है your data frame का name, then ये square bracket and which column you want. So you can do simply like this, and I'll see कि all my CT columns have come. Let's say you want to have multiple columns selected, so out of those 4 columns I want only 3 columns. तो again same way list के अंदर जा करके ये वाला पास करना है, list of list, sex, city and value. So these are 3 different kind of columns I would need, and I want to see only the top 3 values. तो हम लोग इस करके city, sex and value it has come, and now year has been skipped. Same way let's say you want to have conditional things checked. तो you can also do is कि df का जो value है, जो मेरा ये वाला column है, last column है, I want all those values where the population is more than 1 lakh. Then simply you can use this condition as more greater than 1 lakh, and then run this cell, and then you will see कि out of those 2334 records we have around 1000 records where population is more than 1 lakh. Then multiple conditions भी supported होता है कि let's say you have multiple conditions, तो simply % यहाँ पे पास करना है और यहाँ पे करना है. अगेन पहले वाला ही कंडीशन है, उसी में क्या कर रहा हूँ, एक और कंडीशन को ऐड कर रहा हूँ कि जो भी है सेक्स आई वांट ओनली द फीमेल, कि कहाँ पे जो है फीमेल जो है मोर देन जो है 1 लाख है. तो देन इफ आई रन दिस क्वेरी, देन यू विल सी कि आउट ऑफ 2300 रिकॉर्ड सिटीज़, 524 सिटीज़ में वी हैव फीमेल whose population is more than 1 lakhs. So these are the different kind of basic operations you can perform on your data sets. With this we will see कि data को manipulate कैसे करते हैं, because these are also very important, because when you are going to deal with your machine learning model training, तो उस समय जो है ये सब चीज़ को करना is very mandatory, because you will not be training your model with duplicate values, you will not be training your model with kind of missing values. So उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए there are few functions. So let's say कि मुझे जितने भी missing values हैं तो उनको मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो सिंपली यू कैन यूज df_drop.na, and then all the missing values wherever in any of the columns, if there are any missing values, so those things will basically kind of drop from your actual data frame. So let's say I want to run this. So currently I see there are no missing values, so all of them have come here. Let's say कि missing values है, आप उसको drop नहीं करना चाहते हैं, rather you want to fill in some value, क्योंकि you don't want to miss your data. तो what you have to do is कि basically use fill NA, यानी कि जहाँ पे भी null है सब जगह जा करके not applicable को fill कर देगा. Since currently there is no records where we have our null values or empty values, so that's why all of them will remain as it is. But in cases where you have null values or empty values, then वहाँ पे जा करके not applicable को add कर देगा. Then what we have to also do is, again this is again if it is a dropped one, then what we'll do is कि we'll assign df dropped into df and then print their information. So again things have remained the same, that there are 2033 entries, and these are the different columns, these different null counts, not null counts, and data types of your data frames which you have. Let's say कि अभी जो है जो 4th column है उसका नाम value है, but it is not making sense for me कि value क्या मतलब. In this cases you can also rename your columns by making use of data frame का एक function है which is rename. So you can simply use df.rename and pass which all columns you want to rename. So I want to basically rename my value column as population. So give your name which is existing name, colon, and then give a name which is the name which you want to rename it. And now if I print it, now I'll see कि instead of value now I have population here in my data frame. Then एक और काफ़ी interesting चीज़ है which is applying the function to your column. तो लेट्स से आपके पास कोई भी एक कॉलम है और उस पर आप कुछ भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो कंसिडर कि मेरा ये सिटी कॉलम है एंड आई वांट ऑल ऑफ माय सिटी कॉलम्स टू अपीयर इन अपर केस. तो सिंपली क्या करना है
यहाँ पर के df जो भी हमारा काइंड ऑफ डेटा फ्रेम का वेरिएबल नेम है, whichever the column I want to perform action on. So this is what I have to write, and then what function you want to, or what function, or what operation you want to perform on your column. तो let's say in this case I want to simply perform str.upper, तो मैं वही पास करूँगा और सारा का सारा जो कॉलम है इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का सारा जो है अपर केस में आ जाएगा. एंड नाउ विल सी कि ऑल ऑफ दीज सिटीज़ आर नाउ इन दी अपर केसेस. देन अगेन एक और चीज़ है कि कोई भी नॉर्मल सा फंक्शन को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ये तो इनबिल्ट फंक्शन था, बट लेट्स से यू हैव योर ओन फंक्शन. तो मेरा एक फंक्शन है जिसका कि नाम है पॉपुलेशन स्टेटस. तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि अगर 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, देन काइंड ऑफ मेक इट एज अ हाई पॉपुलेशन एज अ रो, एंड देन इफ इट इज़ ग्रेटर देन 3 लाख, देन मेक इट एज अ मीडियम पॉपुलेशन, एल्स मेक इट एज अ लो पॉपुलेशन. तो इसको रीनेम बेसिकली इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली जो डेटा फ्रेम है डॉट अप्लाई एंड देन कॉल माई फंक्शन. तो फंक्शन का नाम हमने लिखा था पॉपुलेशन स्टेटस, वही उसी को मैंने कॉल किया है. एंड देन एक्सिस काइंड ऑफ 1 का मतलब हो गया रो. तो मैं रो पे अप्लाई करना चाहता हूँ, जितने भी रोज़ हैं मेरे पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में सब पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ये वाला चीज़, और इसलिए मैंने एक्सिस 0. इन केसेस वेर यू वांट टू अप्लाई ऑन कॉलम, तो वहाँ पे आपको एक्सिस 0 पास करना होगा. तो नाउ लेट्स सी एंड रन दिस, and now we'll see कि all of these rows which are there, we have another column which is a population status, और ये status के साथ based on their kind of population कि यहाँ पे 76,000 है, तो क्योंकि मैंने बोला था कि अगर 3 लाख से कम होगा तो keep it as a low population. होप कि नाउ इट इज़ क्लियर. सिमिलरली देर इज़ ऑल्सो अनदर फंक्शन इन पांडास कि अभी लेट्स से यू हैव टू सॉर्ट योर डेटा, कि अभी जो हमारा जो डेटा फ्रेम है दैट इज़ यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है वैल्यू. किसी में 76,000 आ रहा है, तो यहाँ पे 45,000 है, यहाँ पे 1,40,000 है. आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑल ऑफ देम असेंडिंग ऑर्डर. तो क्या करना है, सिंपली पास करना है अपना डी का नेम, देन अ फंक्शन नेम्ड एज सॉर्ट वैल्यूज़, और ऑन विच कॉलम यू वांट टू हैव अ सॉर्टिंग डन. क्योंकि अगेन यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है, राइट. सो यू हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड द कॉलम नेम्स ऑन विच यू वांट टू हैव योर सॉर्टिंग्स डन. तो आई वांट टू सॉर्ट ऑल ऑफ माई रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन विच वी हैव. तो विल सिंपली रन दिस सेल, एंड नाउ यू विल सी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 31,000 till 9,20,000 or 90,21,000 records have come here. Similar to sorting, we will also see ranking कि लेट्स से मुझे रैंक देना है कि कौन सा सबसे नंबर 1 पे है और कौन सा सबसे लास्ट में है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. तो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज़ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस रैंक फंक्शन ऑफ पांडास. तो सबसे पहले हम लोग इस वाले कोड में क्या करते हैं कि जो भी सॉर्टेड डीएफ था उसको हम लोग रीसेट कर देते हैं. जो भी हमने सॉर्टिंग परफॉर्म किया था उसको हम लोग रीसेट कर रहे हैं. देन वी आर सिंपली रनिंग रैंक ऑन पॉपुलेशन. तो वंस वी डू दैट, देयर यू विल सी कि all of these cities have got their ranks based on their population. रैंकिंग में भी कि मल्टीपल टाइप होता है कि कैसे आप रैंकिंग देना चाहते हैं. कि लेट्स से इन केसेस वेयर यू हैव 2 cities विच हैव द सेम रिकॉर्ड्स, तो क्या रैंक देंगे उन केसेस में. अगर आप डेंस यूज़ कर रहे हैं एज अ फंक्शन, तो क्या होगा कि दोनों सिटीज़ को वही रैंक मिलेगा, एंड देन जो नेक्स्ट वाला सिटी है उसको वो रैंक स्किप होकर नेक्स्ट मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि यहाँ पे इसको भी रैंक 1 मिला है, इसको भी रैंक 1 मिला है, और इसको रैंक 3 मिला है. इन केसेस वेयर ऑल बोथ ऑफ दीज सिटीज़ हैव द सिमिलर रिकॉर्ड्स, देन क्या होगा, इसको भी 1 मिल जाएगा, इसको भी 1 मिल जाएगा, और इसको सेकंड मिलेगा. तो इन केस व्हेन यू आर यूजिंग डेंस तो स्किप कुछ भी नहीं होगा. बट इन केसेस इफ यू आर यूजिंग मिन और मैक्स, तो क्या होगा कि इसको 1 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, एंड देन इसको 3 मिलेगा, इसको 2 नहीं मिलेगा. इन केस ऑफ डेंस इसको 2 मिल जाएगा क्योंकि दोनों को 1 कंसिडर कर रहा है, देन 2 कंसिडर कर रहा है. बट इन केस ऑफ मिन और मैक्स में क्या होगा कि जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिलेगा, और मैक्सिमम का जो नेक्स्ट वाला जो होगा वो स्किप हो जाएगा, एंड देन 4th वैल्यू विल गेट. आई होप कि इट इज़ नाउ क्लियर. तो यू कैन सिंपली मेक यूज ऑफ ऑल दिस फंक्शंस और मेथड्स ऑफ रैंक, एंड देन यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द रैंकिंग ऑन योर डेटा फ्रेम विच यू हैव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सम अदर पार्ट्स ऑफ पांडास वेयर वील अंडरस्टैंड कि डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, कॉम्बाइन कैसे करते हैं, रीशेप कैसे करते हैं, और ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे के सेक्शन में. तो लेट्स सी कि आई हैव टू ग्रुप माई डेटा सेट बेस्ड ऑन अ गिवन कॉलम. तो वी कैन सिंपली मेक यूज ऑफ df डॉट ग्रुप बाई फंक्शन which is an inbuilt function, and pass your column name, and then the entire data will be grouped based on any of the column names. तो let's say यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रुप भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं पॉपुलेशन का मीन भी निकाल दे रहा हूँ बेस्ड ऑन ईच सिटी विच इज़ देयर.
तो here you'll see कि population का mean भी निकल गया है for different kind of people which they different sex people which they have, and then there also their city names, and then the mean is given here. Now you also want to group by multiple columns, that is also possible. In group by में list of columns में pass करना है and then aggregate करना है. You will see the group by these year and city, and then the aggregation based on sex and then the population. So you'll see ki, these are the years, these are the cities, this is the sex, and this is the population count which you can see, population mean which you can see here. Then moving on to the other parts where you have combining the data sets. So let's say कि I have another data set which I have created कि अगर city ये है तो consider करो कि state ये होगा, city ये है तो consider करो कि state ये होगा. तो इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नया डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहा हूँ विच इज़ समथिंग लाइक दिस सिटी एंड नेम. तो नाउ आई वांट टू बेसिकली मर्ज दिस df2 to my existing df which is this one, this df which I am working on. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि सिंपली विल हैव टू राइट pd डॉट मर्ज पास बोथ ऑफ योर डेटा फ्रेम नेम्स ऑन विच कॉलम यू वांट टू हैव अ मर्ज, क्योंकि अगर सिटी रहेगा तो ऑटोमेटिकली जितने जगह पे ये सिटी रहेगा आई वांट डिफरेंट कॉलम टू बी देयर एज अ पंजाब. एंड यहाँ पे इनर का मतलब है कि ओनली दोज fields will be filled in into this particular where you have basically these are the city names which are available in your previous data sets. So inner outer same way how you have in SQL, similar thing will also have in this pandas data frame. अगर मैं inner करूँगा तो only the kind of intersection of both of the data frames will be printed, and then you can also make use of left, right, outer, all those kind of joins which are available in SQL. So now let's try with inner one, and now you'll see all the records have come. These are the different years, sex, city, population status, and states, and there basically this is the different column which we have merged into my data frame. Similar to merge but a little different in concatenate कि यहाँ पे हमें kind of how I don't have to give here. So in this case what it will do is simply it will go and concatenate the two rows into my existing df. तो इसके लिए सिंपली क्या करना है pd dot concatenate in a list we'll have to pass both of the data frames, and then I just want to ignore the index in this case. And then once I run this, here you'll see earlier we had 2334 rows, now 6 more rows have been added, and all of those things are coming here. Wherever the data was not there, it has automatically filled in as not a number. Let's move on to the another section which says ki how do we remove the duplicates from our data set. So now let's create a new data set with the data where all the names are there, all the ages are there, and these are the different cities. So now let's say I want to remove all the duplicates. Here you will see ki Alice is there again, so 2 times Alice has come here, and 2 times Bob is also there. So now I want to kind of read this create a data frame and also remove duplicates. So to remove duplicates we can simply make use of this drop duplicates function, and then once I run this you will see this is our original data frame which had Alice twice, Bob as twice, but then if you see in the deduplicated data frame, here you have Alice as once and Bob as once and Charlie as once. So all of these are automatically done via this particular drop duplicate function. Some other utility functions of pandas using string manipulation you can also do. So again we are creating another data frame with these are the values. So this is my name and email, and what I want to do is key all these names which are there, I want to create a new column which is name and want to extract from the which is first name, and I want to extract all the first names from the name column, and maybe I can also extract domain from each email IDs which are there. So these are all the string functions you can also automatically apply to your any of your data frame, and you will see ki now the data frame which we have created, name is this, email is this, first name has been automatically added, and then the domain is also automatically added for all the rows which are available. Let's say in cases you want to have the date and time data handling, you can also make use of dt, and using that you can basically perform and find out the date, find out the date name, find out the time from the given data set. And once I run this you'll see ki these are the initial data frame, and from there we have all this time and day of week automatically extracted by making use of inbuilt Python's date time functions. And with this, we are wrapping on our comprehensive introduction to pandas for data scientists. So thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video and leave a comment letting me know कि आपको ये video कैसा लगा. Also share this video with your friends or anyone else, whoever is interested in learning data scientist. Thank you so much.